माने है राजदंड, राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी, राजा की छड़ी का और माने है राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सिंगुल को हटाना है। आपने जो सेंगोल हटाने की जो डिमांड करी है वो क्यों की गई है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि सेंगोल पंडित नेहरू को दिया गया था, उन्होंने तो मना नहीं किया। नहीं, ले लिया था, सम्मान के साथ ले लिया। अगर हमको कहते हम ले लेंगे, लेकिन उसकी जो सही जगह है उन्होंने संग्रहालय में रखवा दिया था। उन्होंने कहा तमिल संस्कृति का अपमान है, जिस तरीके से डिमांड की गई है कि वो गलत कह रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही जगह रख दिया था, सुरक्षित रख दिया था, सुरक्षित था, उसको लाके यहाँ रख दिया है। यहाँ तो संविधान काफी होनी चाहिए। पर आपको लगता है तमिल संस्कृति का अपमान है? बीजेपी कह रही है भारत का लोकतंत्र संविधान चलेगा, सिंगोल से नहीं चलेगा। तो आपने क्यों ऐसी डिमांड करी सिंगोल हटा देना चाहिए? इस सही जगह तो वही थी ना जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा। बात तो नहीं हुई, बात तो नहीं। हमारी अपनी चिट्ठी थी, अपनी चिट्ठी में ये आपका पर्सनल ओपिनियन है? अभी बात नहीं किया, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है? हाँ, हमारा पर्सनल ओपिनियन। Now that we've heard what he's had to say, let's reiterate the significance of the Sengol. First and foremost, the Sengol served as a ceremonial spear of kings. Second, it was considered an emblem of authority. It also represented a transfer of power between different rulers. It has also been an iconic symbol of the Chola reign, the famous Chola dynasty. The Sengol is derived from a Sanskrit word, the word itself being Sanku. And what does Sanku mean? Sanku means conch, essentially, and it is considered to be sacred for the Hindu faith. The conch, of course, was often used as a symbol of sovereignty. So that is the significance of the Sengol. Now remember, the Sengol was placed in the parliament, which much fanfare last year. The opposition, however, leaders continue to attack the Sengol and have backed the Samajwadi Party member of parliament's demand, saying that the rightful place for the Sengol is a museum. मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी is not sensitive to the sentiments of the Tamil people and symbolic gestures do not win Tamil hearts and minds. His party's ideology is contrary to the Tamil ideology. देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंबल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। So let's also tell you some more facts that you must know about the Sengol. First of all, the scepter was handed over to India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. That is its origin. The Sengol, of course, like we said, marks the transfer of power, this time from the British to the Indians. The scepter is a artifact from the Chola dynasty. That is where it traces its history to the iconic seafaring civilization that reigned in India several hundred years ago. The scepter was taken to the Constituent Assembly Hall. That is where it, after being passed on by the British to Nehru, that's where it was taken. It was handed over to Jawaharlal Nehru on August the 14th, on the eve of independence at 11:45 p.m. in the year 1947. Another fact, the scepter was given to Nehru in the presence of Rajendra Prasad, who was the president of the Constituent Assembly. The Sengol will be placed next to the Lok Sabha Speaker's seat. It has already been placed there. That is where it is currently installed. The Sengol is borne by rulers on ceremonial occasions. That is something we know about the Sengol as well. It is also an emblem of authority and sovereignty. That's why leaders hold it. It is called the Sengol in Tamil, meaning full of wealth. So these are some of the things that one needs to really understand about the Sengol. Now the BJP sees this opportunity to attack the India bloc, saying that the Samajwadi Party legislators' demands shows their hatred towards the Indian culture and Tamil culture in particular. They also reminded the opposition that it was in fact Jawaharlal Nehru who had received the Sengol as a symbol of transfer of power from the British. It's a manufactured controversy.
And this is opposition for the sake of opposition. Because the first question that the Samajwadi Party will have to answer is when the Sengol was good and okay and acceptable in 1947, 48, 50, at the time of Pandit Jawaharlal Nehru, why has it suddenly become bad in 2024? The Samajwadi Party has opposed Sengol in parliament. It says that it is Raja ka dand. If it was Raja ka dand, why did Jawaharlal Nehru ji accept the Sengol? This shows the mindset of Samajwadi Party. First they attack and abuse Ramcharitmanas, now Sengol, which is part of Indian culture and Tamil culture particularly. सिंघोल हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है, इसलिए सिंघोल रहना चाहिए। सिंघोल पूरा तमिलनाडु में, पूरा देश में रेस्पेक्ट है। सिंघोल को डिसरेस्पेक्ट करना, अगौरव करना ये उचित नहीं है। इसको बीजेपी खंडन करते हैं।